हेलो, हेलो, हेलो। जनाब, आज आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ एक बड़ा ही टैलेंटेड बंदे से। टैलेंटेड Kaus का इस तरह है कि Kaus basically was all down to my advisor. So if you recall Jeff Sharma, who's like to call myself कि मैं बहुत एक आजाद पसंदाना ख्यालात का मालिक बनता हूँ. I feel like I am very bad at following orders, especially if I don't agree with them, right? And that's not something कि आप आर्मी में सुधार कर सकते हैं इस तरह की सोच के साथ. तो मैं फनी फैक्ट ये है कि प्यास की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज तक मैंने अपने एकेडमिक कैरियर में कोई ब्रेक नहीं ली. मतलब माय बिगेस्ट ब्रेक बिटवीन एनी एकेडमिक institution or degree was I think hardly a month. So quick background of CERN for the audience is CERN जो है ये European Organization of Nuclear Research है जो कि resources to go for something risky. Take risks while you're young. हेलो, हेलो, हेलो। जनाब, आज आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ एक बड़ा ही टैलेंटेड बंदे से। टैलेंटेड इसलिए कह रहा हूँ कि ना सिर्फ उसने बंदे ने पीएचडी की हुई है, बल्कि पीएचडी उसने अमेरिका से की हुई है। उसके अलावा काउस से मास्टर्स किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसके शौक भी बड़े कमाल के हैं। कोई ड्रोन के साथ खेल रहा होता है, कभी रोबोट्स बना रहा होता है, और उसके अलावा बातें भी बहुत बनाता है, और इसके अलावा गेम्स वगैरह भी बड़ा खेलता है। तो आए आपकी मुलाकात कराते हैं उस्मान के साथ। और उस्मान की ख़ास बात पता क्या है कि उस्मान के साथ रोज़े हैं ना, तो हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके कॉफ़ी एरिया, जो इमेजिनरी कॉफ़ी एरिया, उसमें उससे मिल रहे हैं। तो लेट्स टॉक विद हिम। बहुत शुक्रिया मुझे आपने टाइम दिया और यहाँ पे मुझे बुलाया. शुक्रिया. तो यार, बचपन से ही साइंस में दिलचस्पी थी, या फिर वक्त के साथ साथ आप जो है इस तरफ आ गए हो, साइंस की तरफ? फैसल भाई अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बचपन से ही साइंस में दिलचस्पी थी तो इट्स अ मिक्स. आई मीन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे हमेशा से साइंस में या इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में जहाँ पे मैं आजकल हूँ इतना इसका इंटरेस्ट था. लेकिन स्टार्ट से ही मुझे हमेशा से कोई ना नई चीज़, खासतौर पे चीज़ें तोड़ के उनको दोबारा बनाना, कोई इस तरह की जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, मैथ. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे हमेशा से सिर्फ मैथ और इंजीनियरिंग का शौक नहीं था या कंप्यूटर साइंस का. मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद थी. वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट्स जो थे हाई स्कूल में दैट वाज बायोलॉजी. मेरे जो कह अच्छा। लें हाई स्कूल का कह लें सेकेंडरी स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल के जो मेजर्स हैं वो बायोलॉजी और मैथ मैंने दोनों लिए हुए थे. तो बेसिकली हम्म। उस टाइम पे हमारे क्योंकि मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस होती थी, उसका एक आप इलेक्टिव ले सकते होते थे एओ लेवल्स के लेवल पे. लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी, मैंने बायोलॉजी और मैथ दोनों लिए थे. लेकिन आई वुड से कि इनिशियली या दैट इज अ फैक्ट कि मैं हमेशा से साइंस और मोर टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और जस्ट क्यूरियोसिटी ड्रिवन चाइल्ड था. मतलब घर में कोई भी अगर कोई चीज़ होगी हम्म। ना, कोई मशीन, कोई कह लें आपकी अप्लायंस होगी जो कि खराब थी, आई वाज ऑलवेज इंक्विजिटिव कि मुझे वो ठीक करनी है या एटलीस्ट उसको तोड़ के देखना है कि अंदर से है क्या, सो आई कैन सही है। लर्न फ्रॉम. हम्म। तो दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी वाज ऑलवेज देयर. ठीक, ठीक। तो लेकिन एक छोटी सी बात कि फिर आपने बायो की बजाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एकदम आ गए, और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो बच्चा आजकल लाइक होता है, और स्पेशली जब हम लोग थे, तो जो लाइक सबसे ज्यादा लाइक बच्चा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी भी आपने प्यास सेलेक्ट की, तो क्या ये दो, क्या वजह थी? तो इसमें अच्छा ये इसमें मेरा कहूंगा कि मेरे पेरेंट्स का काफी इन्फ्लुएंस था, खासतौर पे दैट हम्म। वाज फॉर अ गुड रीजन और लकीली इट वर्कड आउट. मैं क्योंकि मेरी जो फैमिली में सारे बहुत सारे लोग मेडिकल साइंस में हैं. मतलब मेरे फादर, मेरी कजन्स, ऑल कजन्स, मेरे दो कह लें अंकल, सारे मतलब दे आर लिटरली इट्स अ मेडिकल फैमिली. और मेरी सिस्टर जो है शी इज आल्सो अ डॉक्टर. तो बेसिकली कुछ मेरी इंट्यूशन ये थी कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. आई जस्ट डोंट वांट टू हम्म। बी अ डॉक्टर अगेन, मुझे डॉक्टर नहीं बनना. और सेकेंडली क्योंकि मेरी ये अपनी फीलिंग थी कि आई एम इक्वली गुड इन बोथ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग. तो इट वाज रियली अप टू मी कि मेरी क्या चॉइस है. एंड दैट वाज माय डिसीजन टू गो टुवर्ड्स इंजीनियरिंग. फनली इनफ कोइंसिडेंस ये है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स इवन चाहते थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, आर्मी या एयरफोर्स एज एन इंजीनियर. Because I mean I wear glasses from birth, so I could only go to aeronautical engineering. So I actually went. मैंने आईसीएस भी तक दिया हुआ है, क्योंकि मेरे बड़े ओके। भाई जो है वो 48 से पीएफ में है, ही इज अ फाइटर पायलट.
तो मेरे कह लें जो पेरेंट्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी ना आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करूं एज एन इंजीनियर। लेकिन it worked out for the best कि I didn't go to the army. I ended up not going to the army because I like to call myself कि मैं बहुत एक आज़ाद पसंदाना ख्यालात का मालिक बनता हूँ। I feel like I am very bad at following orders, especially if I don't agree with them, right? And that's not something कि आप आर्मी में दारा कर सकते हैं इस तरह की सोच के साथ। तो मैं फनी फैक्ट ये है कि प्यास के एंट्री टेस्ट आपको पता है एंट्री टेस्ट होते हैं पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी के उस जमाने में हुआ करते थे। तो एफएससी के बाद जिस दिन प्यास का एंट्री टेस्ट था उससे 2 दिन पहले मैं आईसीएस भी दे के आया था हार्ट से। So that's pretty much what my preparation for the anti test was. लेकिन मैंने एंटी टेस्ट सारे टॉप यूनिवर्सिटीज के दिए थे। अगेन जैसे आपने कहा करेक्टली पॉइंट आउट कि उस टाइम पे जो आपके मेरिट लिस्ट थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज द टॉप इन द इंजीनियरिंग राइट हमेशा से। अब ट्रेंड चेंज हो गया कंप्यूटर साइंस बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैंने प्यास में भी अप्लाई किया था नस्ट का टेस्ट दिया था और यूईटी का। बेसिकली 3-4 यूनिवर्सिटी के अलावा मैंने और कहीं नहीं अप्लाई किया था पाकिस्तान में। तो व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट मेरा सब में एडमिशन हो गया हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देन आई वाज एक्चुअली इंक्लाइंड टू गो टू नस्ट। मेरा जाने का शौक था नस्ट में। लेकिन मेरे जो फादर हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया कि नहीं प्यास इज अ बेटर इंस्टीट्यूट यू शुड गो टू प्यास। Because again he has some background in this area or he has been working with colleagues and everything there, so he knew a little background. But I was actually a little bit furious. मुझे बड़ा ये था कि नहीं मेरे काफी सारे दोस्त और ये सारे नस्ट जा रहे हैं I need to go to nust. लेकिन anyway we had a discussion तो मैं प्यास चला गया. It turned out to be a great choice actually. At least at that time हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। प्यास उस टाइम पे I mean things have changed over the years. आपको पता है पाकिस्तान में प्रोग्रेशन जैसे होता है हायर एजुकेशन का। लेकिन I think at that time प्यास was the premier education institution in the engineering at least. और फिर जो है जब आप कर रहे थे इंजीनियरिंग तो आपको लग रहा था कि आपने आगे भी पढ़ना है मास्टर्स करना है पीएचडी करनी है ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था या पैसे टाइम आपको लगा कि यार आप करना चाहिए? Absolutely not. I mean, everything came along afterwards as the years progressed. आप मतलब पाकिस्तान में रहते हुए फर्स्ट टाइम जब मैंने प्यास ज्वाइन किया था तो देयर वाज नो लाइक आइडिया इन द बैक ऑफ माय माइंड कि मुझे मास्टर्स करना है या पीएचडी करना है रिसर्च करनी है। It was just like a normal school kind of thing. You have to go, you do well. For the first few semesters, basically, I was just like what students used to call me a theta. Basically just doing my work and getting excellent grades and that's it. लेकिन कुछ अरसे बाद आपका जैसे कहते हैं आपका जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ता है बाहर की दुनिया से you learn के there is more to it, right? आपने सिर्फ पढ़ना या किताबी कीड़ा नहीं बनना. You have to do something out of the box. आपने कुछ नई चीजें सीखनी है. And that's when you learn के research is the way to go. और I think it will be fair to say कि जब मैं फर्स्ट टाइम पे आस किया था I had no idea कि मैंने मास्टर या हायर एजुकेशन करनी है. This is just by the time I got to like third or fourth semester I learned a few new things and I got interested in learning more things. And I learned also through the studies and internet and all the relations that I built over my undergrad कि इसको करने का सबसे आसान तरीका अगर आपने इस पाथ पे जाना है you have to go for higher education. और again along the way फिर उसके बाद next semesters में जैसे जैसे मैं बाहर internship करने गया या बाहर visits पे गया तो then you realize कि the best way to get higher education is to go abroad. That's just better. और आप इंटर्नशिप पे सन गए थे? जी मैंने प्यास में रहते हुए मेरे ख्याल से 2 या 3 इंटर्नशिप्स की थी. The most memorable one was in 2014 summer thing. That was at CERN जो कि आपने मेंशन की. तो quick background of CERN for the audience is CERN जो है ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च है जो कि एक बहुत बड़ी क्या लें जॉइंट कंसोर्शियम है यूरोपीय यूनियन का और बहुत सारे कंट्रीज का दुनिया जहान से. और वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की और पार्टिकल फिजिक्स की रिसर्च होती है.
और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे एक लार्ज उन्होंने एक हेड्रॉन कोलाइडर बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से 30 माइल पे और समथिंग लाइक दिस, बीच में, जिसमें आप कह लें कि कैसे जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कोलाइड करते हैं, उनसे जो आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स के बारे में, पूरी आपकी कह लें कायनात कैसे एग्जिस्टेंस में आई, इस तरह के सवालों के जवाब जो है आप उस एक्सपेरिमेंट से ले सकते हैं। और वहाँ पे 4 मेन डिटेक्टर्स हैं, मैं उनमें से एक डिटेक्टर पे एक ग्रुप के साथ मैंने वहाँ पे काम किया था एज एन इंजीनियर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सन में बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वहाँ पे बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं, मतलब फिजिक्स का काम बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन दे रियली वैल्यू इंजीनियर्स बिकॉज वी आर द पीपल हु एक्चुअली बिल्ड दोस थिंग्स दैट एक्चुअली enable them to get the data, right? So वहाँ पे इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इवन रोबोटिक्स इंजीनियर्स, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं जब गया था 2014 में, वहाँ उस टाइम पे पाकिस्तान मेंबर स्टेट नहीं था सर का, हम अच्छा। नॉन मेंबर स्टेट थे, के बावजूद देयर वाज अ वेरी प्रोसेस टू गो थ्रू दैट इंटर्नशिप्स। अब हम जो है वहाँ मेंबर स्टेट है सर के, तो अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेयर टू कि जब मैं गया था। तो इट्स अ वेरी अरे इंटरेस्टिंग प्लेस, इट्स अ हम्म लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशली जब मैं गया था उस टाइम पे, क्योंकि LHC जो उनको कहते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, उस टाइम पे ऑपरेशन नहीं था, तो वी हैड चांस टू एक्चुअली गो डाउन इनटू द टनल्स एंड सी एवरीथिंग, so that was a great experience. इंटरेस्टिंग। तो फिर यार आपने सन से फिर आप बैचलर भी इधर से खत्म कर लिया प्याज से, और काउस कैसे आपकी लाइफ में आया? क्योंकि मैं तो काम करता हूँ काउस में, तो आपको कैसे काउस का पता लगा और कैसे आपने, और वो भी सऊदी अरेबिया, जब आप यूरोप गए, यूरोप भी देख लिया आपने, फिर थे भी आप जरा न्यूक्लियर वाली साइड पे उस वक्त, और फिर काउस को मतलब कि काउस उस वक्त थी भी क्वाइट यंग, 2016 में आप आए थे, 15-16 में? मैं 2015 में आया था, मेरा हाँ। बैचलर्स था 2015 में खत्म हुआ था प्यास का। और हम्म। तो it's another interesting story, मतलब I have had a lot of adventures, academic and non-academic, in my brief life. इसकी स्टोरी ऐसी है कि I mean by the time I was at CERN I knew कि I need to pursue research, right? मुझे पता था कि I want to do something more, create something new. uh, एंड इवन दो मैं सर में था, मेरा बाय द वे काम जो था वो न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट था, इट वाज मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। तो ओके। हाँ, और मैंने जो वापस आके अगले साल प्यास में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था अपना, दैट वाज ऑन रोबोटिक्स एंड कंट्रोल, जो कि इट टर्न्ड आउट आई लाइक्ड इट सो मच दैट आई वांटेड टू डू रिसर्च इन दैट एरिया। मैं जब सन से वापस आया था, मेरी पहली फीलिंग जैसे कि हर एक यंग बच्चे की होती है कि that is the place बस I need to go आई विल गो and I एग्जैक्टली। but मैं जब वापस आया तो मैंने एक आई there was a new course प्यास में ऑफर किया गया था रोबोटिक्स का और कंट्रोल्स के। I took those as electives कि देखते हैं, they seem like an interesting theory. Turns out मुझे वो इतनी पसंद आई कि I wanted to do research in it. And then I realized if I go to CERN right now, I will not be able to do research in that area because that is not the core area of research at CERN, right? वो वहाँ पे उस मौजू पे इतना काम नहीं करते। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि I should go abroad somewhere else to at a good school to get my master's or maybe PhD. But at that point, I just wanted to get a master's again. मेरा इरादा PhD करने का नहीं था। तो काउस का इस तरह आया कि काउस basically was all down to my advisor. So if you recall Jeff Shema, who was my ये master's advisor, he pretty much has my PhD advisor too. वो रिसेंटली काउस मूव किया था उन्होंने जॉर्जिया टेक से, बिल्कुल। तो वहाँ पे अभी भी जॉर्जिया टेक में ही वाज एडजंक्ट फैकल्टी। तो मैं क्योंकि यूएस में मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा था, मैं GRE टॉफल सारे स्टेप्स दिए थे दिसंबर 2014 में, when I was preparing for applications for grad school in the US. So I came across his profile and it was still on the Georgia Tech page, but I applied and I realized that he had come to KAUST. And by that point, I realized, okay, KAUST is something. And जितना ज़्यादा मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, I was more and more intrigued कि
okay, this is something weird. This is a very weird kind of school. Weird in a good sense. You understand what I mean, right? That or secondly, मेरे कुछ seniors थे लम्ब से, मतलब the people I knew who were at KAUST at this point. वो Dr. Sleem के group में थे in communications lab, Pakistani थे. Okay. You may, so I reached out to one of them for some feedback, how it is like, and I think she was in her second or third semester in the master's because she was 1 or 2 years ahead of me. So the feedback I got from the people, and when I contacted Jeff and he reached back to me, it was really positive. Anything that you can hear from them about KAUST was great. मतलब इतनी अच्छी किस्म की आपको फीडबैक मिल रही है इतने established लोगों से, which the people you can trust, आपको भरोसा है. So at the end of the day, I would say that it was down to my advisor. He basically told me that so I had admission offers from other schools in the US, UK, and Europe too. In Germany, in the UK, and in the US in a couple schools. लेकिन KAUST में जो मेरा advisor था, he was one of the best people in the area. So उसने basically मुझे convince किया कि you won't have a bad time if you come to KAUST. Again, choice is yours, but if you come here, you will have a great time. Turns out I did listen to him, and it turned out great. So that's how I ended up in KAUST. मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जेफ शर्मा वाकई नो डाउट कि उसका बड़ा नाम है फील्ड के अंदर सारा कुछ. लेकिन फिर आप जितने भी लोग मास्टर्स के लिए आते हैं, जब वो पीएचडी करने के लिए वो पीएचडी हमेशा KAUST से ही करते हैं. तो आपके केस में आपने पीएचडी के लिए दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड चले गए, मतलब कैसे, क्यों KAUST से ही क्यों नहीं की पीएचडी, जब तो यही था? मतलब अगेन द जर्नी कंटिन्यूज. मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं प्यास का गोल्ड मेडलिस्ट था, ठीक है. तो जब मैं KAUST में आया, तो first of all, it's a considered thing that KAUST only takes gold medalists from Pakistan for some reason. जो कि एक कह लें ताबू है या कह लें एक thing है. लेकिन I mean, people were surprised even in my university when I told them that I'm going to KAUST for masters, right? Because at that time it was still new. ये काफी नई यूनिवर्सिटी थी, इतना इसका इंटरेक्शन इस रीजन में खासकर पाकिस्तान में को नहीं पता था. अब तो बहुत मतलब कह लें नॉलेज है सब लोगों को, लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं था. So they were surprised कि why are you leaving a US school for masters and going to Saudi Arabia, like kingdoms? It's just weird. So but I just left that thing. मास्टर्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन अगेन there comes a point, at least I feel like in the beginning of your career, the more experiences, जितने आपको ज़्यादा experiences होंगे, जितने आप ज़्यादा expertise breadth अपने फील्ड में ले सकते हैं, different लोगों के साथ काम कर सकते हैं, अपना network establish कर सकते हैं, it's better for you. As a young individual जो अपने career के बिल्कुल beginning में है, you should take risks, you should build new connections, you should go to different places. आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाके काम करना चाहिए, उनके साथ अपना connection बनाना चाहिए. Or KAUST was a great place. I mean, I could have done PhD maybe in 3 years after finishing my master's, right? क्योंकि मैं वहीं पे master's किया था, तो traditionally I could just do my PhD. And Jeff was pretty happy with me. I was pretty happy with him. लेकिन we had a conversation toward the end of my master's के I think I want to explore another opportunity because I had a great time here, and he agreed. I mean, he even told me, I was told by a professor at University of Maryland afterwards, the letter I got from Jeff, he wrote that if it was possible for me, I would have kept Usman here, but I want him to take another experience, and that's why he should go. And that's probably the best thing anyone can give you as a recommendation, that they want to keep you, right? So it was like a perfect ending to my master's. Lekin again, Jeff himself realized एक interesting चीज Jeff Sharma के बारे में ये है कि he has never stayed at a university for more than 6 years in his career. So we two are similar in that sense that मैं भी किसी एक जगह पे ना, मतलब पक्का आपका कह लें ठिकाना करने का वो मेरा ज़ेन बिल्कुल नहीं है. I need to have different more experiences in my life. So I think main contribution was not the quality of work or the quality of the lab as the reason for leaving KAUST. It was more like, okay, I have this experience in my belt.
and this is great, but I need to go up one more step to go somewhere else, get more experience from a different perspective, from different people. इसलिए मैं फिर यूएस के लिए मैंने दोबारा फिर ग्रेजुएट स्कूल के लिए अप्लाई किया, वही दोबारा जीआरई दे के सारे जॉब का प्रोसेस होता है. मेरा बस यही सवाल था कि दोबारा जीआरई देनी पड़ी होगी आपको. यस, क्योंकि आपका जीआरई मेरे ख्याल है, जी. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 1 या 2 साल बाद एक्सपायर हो जाता है ना, कोई ऐसा सीन. अच्छा. तो कोई you स्टेज have to होता है get फिर. a new one, TOEFL सारा, और फिर वही ग्रेजुएट स्कूल्स की एप्लीकेशन, पूरा आपका सीजन उसमें लगता है. It was again, it's a frustrating experience, but it is worth it once you get it done. तो उसके बाद मुझे यूएस में 3-4 ऑफर्स थी, लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जाने का जहाँ तक ताल्लुक है, it was more of a, again, influence with my advisor and also the peers, people I met. कि उनकी recommendation थी कि it's a very good department, especially in the area of control. नहीं, ये बड़ी मुश्किल काम होता है कि अपने जो आप बैठे ना सॉफ्ट जगह पे जहाँ पे सारी चीजें आपके हाथ में हैं, और उससे निकल के अपने आप को दोबारा चैलेंज करना, इट्स डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट थैंक्स फॉर शेयरिंग कि क्या वजह थी आप. तो कैसा रहा फिर मेरी लैंड का, जरा थोड़ा सा बताओ कि कैसा वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, और कितने साल में आपने पीएचडी कंप्लीट की. उसमें दरमियान में Maryland, कोरोना भी है. oh, I have to bring it up. I mean, everyone has to bring it up, right? In our Exactly. last 5 years. Maryland was an experience and a half, I would say. It was like I like to say it was like a sine wave. It had ups and its downs, and I mean you have a PhD too, so you probably understand me when I say PhD is always like that. You will have very highs and very lows. It continues. Exactly. All what matters is क्या आप finish line cross करें at the end of the day. लेकिन alhamdulillah, मेरा Maryland का time, it was pretty good overall if I have to look back. मैं फॉल 2017 में गया था मैरीलैंड, मतलब राइट आफ्टर काउस्ट. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज तक मैंने अपने एकेडमिक कैरियर में कोई ब्रेक नहीं ली. मतलब माय बिगेस्ट ब्रेक बिटवीन एनी एकेडमिक institution or degree was, I think, hardly a month, and that was between my PhD defense and my postdoc, which we'll come to later. लेकिन बात ये है कि मैरीलैंड में जाके मेरा अगेन हमेशा से कह लें emphasis ये रहा है कि जिस जगह पे आपने जाना, you have to make your mark or you have to make your impression in the first year or in the first semester. You have to work hard कि आपने अपना कह लें एक impression, अपना figure बनाना है कि you are there for a reason. मैंने अपने पहले सेमेस्टर में अपना एडवाइजर जो है वो सेट किया, उसके साथ रिसर्च की बात की, रिसर्च शुरू कर दी. I won a outstanding graduate assistant award within the first year of joining Maryland. I was teaching a class too. So that was great, like for a start. And then I kept publishing with my previous advisor and also started working on research with my new advisor. So that was a kind of a transition that many people, उनको मसला होता है कि एक टॉपिक से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट होने का. आई थिंक मेरा जो इंट्रैक्शन था काउस का और मेरी पुरानी जो रिसर्च का एक्सपीरियंस था, दैट हेल्प मी अ लॉट. उसने मुझे काफ़ी कह लें इस तरह से इनेबल किया कि मैं स्मूथलेस, बिल्कुल मेरी स्मूथ ट्रांजिशन थी फ्रॉम मास्टर्स रिसर्च टू पीएचडी. बाकी सारी बातें अप्स एंड डाउन्स होती हैं, कोर्सेज, क्वालिफायर्स, proposals, all these things keep on going. उसमें कई दफ़ा hurdles होती हैं, कुछ दफ़ा आप क्लियर करते हैं, कुछ दफ़ा आपको दोबारा ट्राई करना पड़ता है. These are the things that happen in the PhD, especially US का PhD system. It's kind of cruel, but it also helps you train for the better in the future. So alhamdulillah, PhD में I think I did very well in the sense कि I completed my PhD in 5 years. मैं 2017 में गया था, 2022 में, which is a very typical time for a US PhD. लेकिन उसमें कैविएट ये है कि मैं अपने एडवाइजर से भी मजाक से कह रहा था, मेरे PhD एडवाइजर जॉन बार्स, he is also a very well known control person in the community. He's even actually way senior than Jeff Sharma. So the thing is that I am his 94th, I think, PhD student. Wow. जो कि graduate. Sure. And he is 73 years old, by the way, now. And I think he will have his 100 PhD student this year. So he's a big thing in control too. But anyway, I mean, मैंने 5 साल में PhD मुकम्मल की है, लेकिन इसमें से 2 साल I was not even at the graduate school. मैंने हर साल
जो है तकरीबन 3 से 6 महीने इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप पे काम किया हुआ है। तो मेरा ये दैट अगला मीन्स क्वेश्चन यही था आपसे कि इंटेल, मित्सुबिशी, एबीबी, ऑल दिस बिग मैं सिर्फ ये नेम्स। आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो ड्यूरेशन है 5 साल की, दैट कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज आई वाजंट एट स्कूल फॉर द होल 5 years. If you take out the internships part, जो कि different projects होते हैं, they are not really actually related to your PhD most of the times. They are like on the separate side. So you can pretty much say I did my PhD in 3.5 years. So वेरी गुड, I think I'm pretty satisfied. वेरी इम्प्रेसिव। तो ये फिर आप जो इंटेल, एबीबी और मित्सुबिशी, ये सारे जब आप यूएस में थे तब आप इन सारी बड़ी बड़े कंपनीज में आप इंटर्नशिप करते रहे? हाँ जी। तो इंटर्नशिप यूएस में तरीका ये होता है कि ड्यूरिंग योर पीएचडी आप 5 साल के दौरान समर्स में, खासतौर पर समर्स में आपके पास कोर्सेज नहीं होते। इवन फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर यू यू डोंट टेक कोर्सेज इन एज अ ग्रेड स्टूडेंट। तो समर के सेमेस्टर में आप इंडस्ट्री के साथ या किसी भी कंपनी के साथ इंटर्नशिप पे काम कर सकते हैं। और ये इंटर्नशिप ज़्यादातर रिसर्च इंटर्नशिप्स होती हैं, जिसमें आपके डिफरेंट नए तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। दे आर रिलेटेड टू योर रिसर्च, लेकिन वो कह लें आपका पीएचडी का डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है पार्ट हो। सो हम्म, द पर्पस ऑफ दीज इंटर्नशिप्स इज टू ऐड ब्रेड्थ टू योर रिसर्च एरिया, राइट। एक क्योंकि आपकी कोर ऑफ की जो पीएचडी रिसर्च है वो तो आपकी एकेडमिक यूनिवर्सिटी में हो रही है। जिस एक या दो आपके कह लें मेन प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप अपनी पीएचडी थीसिस लिखते हैं। But if you can build your breadth in different other sub areas of the field, जिस तरह फॉर एग्जांपल कंट्रोल में है, डिफरेंट कंट्रोल की टेक्निक्स हैं, या रोबोटिक्स में एरियल रोबोटिक्स है, प्लानिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, मल्टी एजेंट सिस्टम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप एक एक प्रोजेक्ट उस इंटर्नशिप में दौरान कर लें तो इट रियली बिल्ड्स अप योर सीवी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कह लें पीएचडी के दौरान 4-5 डिफरेंट इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट किए हुए हैं इंडस्ट्री के साथ। और there are still like publications from these projects on the way which I have to publish. लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपका ना सिर्फ अपना पर्सनल नॉलेज बढ़ता है, आपके पर्सनल ब्रेथ बढ़ जाती है, योर सीवी लुक्स वे बेटर फॉर एनी जॉब इन द फ्यूचर। और ऑल्सो आपके कनेक्शन और नेटवर्किंग बनती है, ना सिर्फ एकेडेमिया में जो कि आपके प्रोफेसर हैं और आपके पीयर्स हैं, बल्कि इंडस्ट्री में भी। और आप क्योंकि अब ऐसी एक जगह पे काम करते हैं जहाँ आपका डिफरेंट कनेक्शंस के साथ हमेशा इंटरेक्शन रहता है, यू नो द वैल्यू ऑफ कनेक्शंस एंड नेटवर्किंग, नॉट डेफिनेटली। ओनली इन एकेडेमिया बट आल्सो इट हेल्प्स यू हम्म, रिगार्डलेस आप आगे जाके इंडस्ट्री में काम करें या एकेडेमिया करें। तो हाँ दिस इज रियली हेल्पफुल। हाँ, नेटवर्किंग आप देखें, जितनी आपकी नेटवर्किंग होगी आपको उसके हिसाब से प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आप अकेडमिया में रहते हैं, अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सारी यूनिवर्सिटी आप बिल्कुल। डिफरेंट कंपनीज में काम कर चुके हुए हैं, प्रोफाइल आपका बन चुका हुआ है, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिलीवर किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वेरी इम्प्रेसिव। अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि अब NIST, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बता भी दें कि ये क्या है। तो नेक्स्ट या एनआईएसटी जिसे आप कह रहे हैं, तो इसकी स्टोरी ये है कि मैंने अगस्त 2022 में बेसिकली कोविड एरा के बाद अपनी पीएचडी डिफेंड की थी। तो उसके बाद एक पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि डिपेंड करता है कि पीएचडी करने के बाद बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट शुड वी डू, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें पोस्ट डॉक करना चाहिए, पोस्ट डॉक नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री में जॉब करनी है, एकेडेमिया में रहना है। तो मेरा हमेशा से कहने बड़े अगेन ड्यूरिंग पीएचडी, इवन ड्यूरिंग माय मास्टर्स, मेरा कुछ आइडिया बना हुआ था कि आई वांट टू स्टे इन एकेडेमिया, आई वांट टू बी अ प्रोफेसर इन द फ्यूचर। उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक नेसेसिटी नहीं है, लेकिन इट्स कंसिडर्ड ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी आजकल कि यू नीड टू डू अ पोस्ट डॉक. Postdoc is like a job, but it's a good mix between academia and research and industry. If you think about it, कि आपके पास टाइम ये होता है कि आप अपना इंडिविजुअल रिसर्च प्रोग्राम थोड़ा बहुत बना सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयारी कर सकते हैं टू बी अ फैकल्टी मेंबर इन द फ्यूचर। और आप कोई कह लें पार्ट टाइम मेंटरशिप कर सकते हैं किसी रिसर्च ग्रुप में, जो यंग इंडिविजुअल्स या इंटर्न्स आते हैं, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो जो आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं आपके एडवाइजर के साथ, यू कैन को एडवाइज देम, लर्न अ बिट and learn to write proposals and things like this. So क्योंकि मेरा हमेशा से कैरियर का प्लान ये था कि I want to be a faculty member. Uh, that's why I chose to do a postdoc before applying for that. Varna, I actually had a couple of very good offers from the companies
some of the companies that I worked for during my internships, I could just go to industry after PhD because about 95% of जो आपके PhD students हैं ग्रेजुएट होने के बाद एटलीस्ट यूएस में वो इंडस्ट्री में जाते हैं बिकॉज यू नो लाइक प्रोफेसर्स कम लोग बनते हैं इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं वहीं पे लोग जाते हैं तो लेकिन मैं क्योंकि फैकल्टी बनना चाहता था तो मैंने पोस्ट डॉक का फैसला किया दिस अपॉर्चुनिटी वाज प्रीटी गुड नेस्ट इज कॉल्ड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ये एक यूएस गवर्नमेंट का इदारा है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है जिसका गोल ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है उसको प्रोसीड करे उसकी खासतौर पे जो इस तरह की चीज़ों के स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि मैट्रिक स्टैंडर्ड्स है एक इंपीरियल स्टैंडर्ड्स है सो दे स्टैंडर्ड्स और इस तरह की चीज़ें निस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो कि इंडस्ट्री को फिर फॉलो करने होते हैं initially in the US, but again, US dominates the world, so ये सारे स्टैंडर्ड्स ग्लोबली फॉलो किए जाते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से आई थी कि मेरी पीएचडी का कुछ हिस्सा जो था वो ऑटोमेटेड व्हीकल्स पे या कह लें आप जो गाड़ियां जो खुद ब खुद रोड पे चलती फिरती हैं और खुद ही सेल्फ ड्राइविंग जिसे हम कार्स कहते हैं तो उस पर कुछ मेरी रिसर्च थी पीएचडी की और मेरा इंटर के साथ प्रोजेक्ट भी तो निस्ट में एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि उनको एक पोस्ट डॉक चाहिए था इस एरिया में रिसर्च के लिए टेक्निकल रिसर्च के लिए तो क्योंकि मेरी उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड था लेकिन अगेन दिस इज मोर लाइक अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ माय एरिया ये मेरी जो एक्सपर्टीज है पीएचडी की उसका एक स्पेसिफिक रिसर्च एप्लीकेशन है और सेकेंडली ये पोस्ट जो है एक कहने जॉइंट है यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंडस्ट्री के दरमियान में so I'm in connection with NIST. I'm also in connection with University of Maryland, Johns Hopkins University और Brown जो कि एक उनका कंसोर्शियम है NIST के साथ तो this was like a very good middle ground in the sense that you get the best of the both worlds you get a project or the insight from the industry and the government but you also have the freedom to do as much you want to do like if you are in the university like जैसे मैं यूनिवर्सिटी में काम कर सकता हूँ वैसे ही मैं वहाँ कर सकता हूँ तो I think it was a perfect match. So basically, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दिया था पोस्ट डॉक तो it's been like 6 months 6-7 महीने हुए मुझे काम करते हुए तो क्या यार अब मैं बस आखिरी मेरा क्वेश्चन होगा तो ये कि क्या आप पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सारे यंग बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि यार बैचलर कर रहे हैं सोच रहे हैं मास्टर्स के लिए जाएं या पीएचडी के लिए बाहर जाएं या जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीएचडी कर चुके हैं पाकिस्तान से पीएचडी की है वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं तो क्या आप मशवरा देंगे उन सबको मशवरा मेरा कह ले यूथ को it's funny to say because I still consider myself young you are young लेकिन absolutely नहीं तो मतलब फैसल भाई मेरा मशवरा ये है कि if you have any resources to go for something risky take risks while you're young risk in the sense के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूंगा प्यास में जब मैं था तो प्यास में एक ऑप्शन होती थी हमारे पास मास्टर्स करके यू कैन गेट अ फेलोशिप और उसके बाद आप पीएसी में असाइन हो जाते थे यू हैव अ परमानेंट जॉब जो कि आपके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बड़ी अच्छी जॉब समझी जाती है पाकिस्तान बिल्कुल इट्स लाइक अ सेफ प्लान और ये जो सेफ्टी प्लान है ना मेरे ख्याल से ये हमारी जो यंग आपकी नस्ल है उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है और बेसिकली इट ब्रिंग्स यू डाउन इन द सेंस यू फील लाइक यू आर इन अ सेफ जोन अगेन जो आपने बात की थी कंफर्ट जोन से अपनी बाहर जाने वाली जो तैयारी है ना मेरे ख्याल से मैं इसलिए कहता हूँ आप आजकल के पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ज्यादा कि जो आपके बच्चे हैं ना यू हैव टू पुश देम आउट इन ऑफ द कंफर्ट जोन एज सून एज यू कैन उनको बाहर भेजें बाहर पाकिस्तान से भेजना जरूरी नहीं है यू कैन send them to anywhere like some boarding school if like a summer school internships कोई ऐसी चीज जो कि उनको नॉर्मल अपनी कंफर्ट जोन से उठा के किसी नए एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाए चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो रिसर्च है जिस एरिया में उनका इंटरेस्ट है अगेन यू डोंट हैव टू मेक एवरीवन इंजीनियर और डॉक्टर और एनीथिंग let the people do what they want to do but at least try to push them out of the comfort zone as early as possible in the youth और आप यकीन करें जैसे ही मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हम प्यास से 2-3 लड़के थे जो कि स्टार्ट में हमने कह लें वी इनिशिएटेड कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स बाहर जाने लगे इंटर्नशिप्स पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे अब प्यास से हर साल को मेरे ख्याल से 10-12-20 बच्चे बाहर जाते हैं
सेम प्रोग्राम्स पे, लेकिन यू सी ओवर द जनरेशन थिंग्स मल्टीप्लाई, अवेयरनेस बढ़ती है, और आप यकीन करें उन स्टूडेंट्स का जब वो वापस आते हैं किसी भी नए एक्सपीरियंस से, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, दे गेन एवरीथिंग, दे हैव अ न्यू विजन, दे नो व्हाट टू डू इन लाइफ। और पाकिस्तान के लिए यही अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अब मैं जिस सिचुएशन में हूँ, आई कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान इन एकेडेमिया एंड रिसर्च इफ आई एम बैक इन पाकिस्तान, राइट? मैं अभी कुछ दिनों पहले लम्स किया था, कुछ अर्से बाद शायद मैं इंशाल्लाह नस्ब भी जाऊंगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम, आपके बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं पाकिस्तान में भी, इफ यू वांट स्टे इन पाकिस्तान। आई एम अ प्राइम एग्जांपल, मेरी अंडरग्रेड या कह लें कॉलेज बाहर के नहीं है, आई स्टडीड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग माय कॉलेज, लेकिन देयर इज स्टिल अपॉर्चुनिटी, बट यू जस्ट हैव टू पुट एफर्ट, और अगेन द वर्ड इज द सेम, ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है और आपके पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, बड़ा जबरदस्त आपने मैसेज दिया है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक्सप्लोर करो दुनिया को भी, और अपने आप को भी, और अपनी कैपेबिलिटीज को भी। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बड़ा टाइम दिया है आपने। और आखिर में जाते जाते एक छोटी सी चीज, कि वो बड़ा आपने, मैंने देखा करता हूँ आपकी वीडियोस बड़ी मशहूर हैं जिनमें आप बड़ा गेमिंग वगैरह के अंदर काफी इन्वॉल्व थे। उस क्या इंटरेस्ट क्या है, वो गेमिंग भी चले गए, फिर उसके बाद उसमें भी थे, वो क्या कहते हैं, रोबोट्स को भी लगे रहते थे, कुछ ना कुछ इस तरह की वीडियो। वो क्या हॉबी है या फील्ड की वजह से? फैसल भाई, ये मेरी दो तीन हॉबीज हैं जो कि कह लें स्टार्ट से अभी तक मेरे साथ चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वुड सरप्राइज, फोटोग्राफी एंड मॉडलिंग आर माय हॉबीज एंड आई स्टिल डू देम व्हेनेवर आई गेट टाइम। मेरे दो तीन फोटोशूट्स भी किए हुए हैं जैक एंड जोन्स के साथ, जो कि मेरी स्टिल कह लें काइंड ऑफ पार्टनरशिप है अब्रॉड। फोटोग्राफी का मुझे हमेशा से शौक है, आई स्टिल हैव अ होल बंच ऑफ गैजेट्स जस्ट फॉर फोटोग्राफी इन माय ट्रैवल किट। इसके अलावा गेमिंग की जो बात है, यस आई एम अ गेमर। हाँ, लोगों को, मुझे कह लें इवन कॉलेज के जमाने में, दे वुडंट बिलीव मी कि देयर वाज एन एग्जाम इन द मॉर्निंग बट आई वाज स्टिल प्लेइंग गेम्स एट नाइट। दैट्स जस्ट मी, दैट्स हाउ आई वर्क। गेम्स में मुझे काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, अब उसका नया वर्जन आने वाला है। आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब पे रेगुलरली पोस्ट करता होता था अपनी हाईलाइट्स या वीडियोस। फीफा में मुझे खेलने का शौक है, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये गेम्स जो है मैं हमेशा से खेलता आया हूँ। और दैट्स अ प्राइम एग्जांपल आपके लिए कि you can do well in academia research and you can still play games and have fun, but there should be a परफेक्ट। balance, right? And या that's what makes you a good individual. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वाली हॉबीज सारी मेरे साथ हैं। और जहाँ तक वो रोबोट्स और फ्लाइंग का ताल्लुक है, क्योंकि मेरी रिसर्च, मेरे ख्याल से ये मेरा शौक बचपन से था, हमेशा से मुझे ड्रोन फ्लाइंग का शौक था। लेकिन क्योंकि मेरी रिसर्च उस एरिया में है, एरियल रोबोटिक्स में, तो ड्रोन्स जो है, मैं पर्सनली 5 मेरे पास ड्रोन्स अपने भी हैं, जो कि मैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करता हूँ, फोटोग्राफी के लिए, माय गॉड। सिनेमाटोग्राफी के लिए। लेकिन बेसिकली इट इज अगेन एन एग्जांपल कि आप अपने शौक और अपने कैरियर को अलाइन कर सकते हैं once you play the cards right, ठीक है? और अगेन बात वही है कि your boundaries out of your comfort zone from the beginning, you will get there eventually. यार थैंक यू वेरी मच उस्मान, बड़ा मजा आया सारी बातें करने का। नहीं, दिल नहीं करेगा तो मैं आप खुदा हाफिज आपका कह दूं। शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर। ग्रेट।